Hello everyone, this side Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. And in this video, I'm going to ask you few questions related to oncology review. So इस पूरी वीडियो के अंदर हम oncology के questions करेंगे जो कि NCLEX and NOSAT based हैं. Let's see आप लोगों का knowledge कितने doubts आपके create होते हैं और कितने doubts आपके already clear हैं. So let's start the video with the first question. So the question number 1 in front of your screen is basically a nurse is reviewing the laboratory reports of a client who underwent a bone marrow biopsy. The finding that would most strongly support a diagnosis of leukemia is the presence of large number of immature. So guys, आपको मुझे बताना है इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए what is leukemia. अगर आपको ल्यूकीमिया के बारे में मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं. सो ल्यूकीमिया इट्स पर्टिकुलरली अगर आप बात करते हैं ल्यूकीमिया की, हमारा जो ल्यूकीमिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, AML एंड ALL. सो इट्स माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया. लिम्फोइड में आपके जो बी लिम्फोसाइट और जो टी लिम्फोसाइट्स है वो एसोसिएटेड होते हैं, और माइलॉइड के अंदर आपके WBCs एंड योर मोनोसाइट्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेच्योर नंबर, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर. तो इनमें से कौन से ऐसे वो सेल्स हैं जिनका नंबर इंक्रीज हो रहा है? सो गाइस, लेट मी गिव यू few seconds. Okay, so the answer is option number 4. So let me give you the rationale behind it. So guys, the rationale is leukemia is manifested by an abnormal overproduction of immature leukocytes in the bone marrow. Increased number of monocytes may result from a viral infection. तो मोनोसाइट जो है वो वायरल इन्फेक्शन के बढ़ने से भी बढ़ सकते हैं, और जो आपके इंक्रीज नंबर ऑफ बेसोफिल्स हैं वो किसी एलर्जिक रिएक्शन का साइन होते हैं, एंड जो आपके थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो आपके पॉलीसाइथीमिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि ल्यूकीमिया को. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Next guys, the question in front of you. The nurse observes that an area in the mouth of a child with leukemia is bleeding. Okay, which of the following items should the nurse use to promote homeostasis over the lesion? उस लेजन जो उसके माउथ में हो रहा है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं? What she can do? A dry tea bag, a non-sticky gauze sponge, or cryogum, a cotton ball, embalmed petroleum jelly. So guys, what do you think? What will be the answer? Let me give you few seconds. So the correct answer is option number A. Because जो dry tea bag होता है उसमें tannic acid होता है. Let me give you the rationale. So guys, basically a dry tea bag placed on a bleeding area can be effective to control bleeding from lesions on the oral mucosa. The tannic acid in the tea apparently helps to control the bleeding. तो जो dry tea होती है उसमें tannic acid होता है जो कि prevent करता है bleeding से. Now let's move on to the another question. Question number 3 in front of you everyone. Which action is most important when the nurse is planning pain management for a client after lobotomy for a lung cancer? So guys, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लोबेक्टमी होता है वो लंग के किसी लोब को कट कर देने को बोल रहे हैं, और लंग कैंसर में हमारी जो मैनेजमेंट होती है उसमें लोबेक्टमी आता है. सो प्लानिंग पेन मैनेजमेंट, जिस क्लाइंट की लोबेक्टमी हुई है उस पेशेंट के पेन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ. जब भी आप किसी पेशेंट का पेन मैनेज कर रहे हो तो अगला जो स्टेप होता है दैट इज ऑलवेज पेन असेसमेंट. सो द आंसर विल बी हियर reposition, reassess, reassuring, readjusting. So guys, the answer will be reassessing, because after if the patient is experiencing any kind of pain, it's very important to assess the pain. So you're gonna reassess the client after administering the pain medications. Question number 4 in front of you. A 32-year-old woman recently diagnosed with Hodgkin's disease is admitted for staging by undergoing a bone marrow aspiration and biopsy. To obtain more information about the client's nutritional status, the nurse should review the results of which test? So guys, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 32-year-old जो लेडी है वो हॉजकिन डिसीज के साथ डायग्नोज हुई है. So Hodgkin and non-Hodgkin, these are the types of lymphomas. Okay, ये लिम्फोमा के टाइप्स हैं जो कि लिम्फ नोड्स के अंदर मास डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स एक्युमुलेशन.
सो लिम्फोमास का टाइप्स में आता है हॉजकिन. नाउ आप स्टेजिंग कर रहे हैं अंडरगोइंग द बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन. इनमें से कौन सा टेस्ट आप करेंगे? रेड ब्लड सेल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल, reticulocyte count or albumin level. So guys, you have few seconds, just give me the answer. What you will do? What will be the answer? Yes everyone, the answer is albumin level. Okay, so let me tell you the rationale behind it. So basically serum albumin levels help, okay, determine whether protein intake is sufficient or not. Protein are broken down into amino acid during digestion. Amino acids are absorbed in the small intestine and albumin is built from amino acid. The red blood cells, bilirubin level, reticulocytes could not indicate protein intake. So that is the most important point. That is the albumin nutritional status के लिए. Next guys, question number 5 in front of you. You have few seconds to give me the answer. A client who has been prescribed chemotherapy. Okay, एक client है जिसको प्रिस्क्राइब किया गया कीमोथेरेपी इज वरिड एंड वांट टू टेक हर्बल ट्रीटमेंट. ये बहुत कॉमन पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोई कैंसर का पेशेंट है वो हर्बल ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो आप क्या जवाब देंगे? So the nurse best response at this time will be what? You are making a mistake and placing your life in jeopardy. Herbal treatments are not approved by the government regulatory agencies. Herbal treatment has not been researched with cancer. Tell me more about your concern with chemotherapy. So guys, what do you think? What will be the answer? What will be the answer? Question number 5 guys, what will be the answer? So यहाँ पर अगर आप पेशेंट का कंसर्न लेते हो कीमोथेरेपी के बारे में, दैट विल बी बेटर अप्रोच. क्योंकि बाकी के तीनों पॉइंट्स एक डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं कि हर्बल ऐसा है, हर्बल ऐसा है. बट वी विल असेस, वी हैव टू आस्क ओपन एंड क्वेश्चंस. So what we'll do, we will ask the patient that tell me more about the concerns with the chemotherapy. Now guys, the question number 6, the next question in front of you. Okay, so you just give me the answer. A client has been receiving radiation therapy for 3 weeks to treat cancer and has fatigue. Which of the following should be considered while the nurse plan intervention to help the client cope with the fatigue? So the client has been receiving radiation therapy. 3 हफ्ते से ले रहा है वो पेशेंट जो कि कैंसर है, उसको काफी थकावट महसूस हो रही है, काफी वो थक रहा है. तो व्हाट यू विल डू? फटीग इज टेम्पररी प्रॉब्लम दैट रिक्वायर नो एक्टिव इंटरवेंशन. आप क्या उसे ये बोलेंगे कि फटीग तो टेम्पररी है, वो ठीक हो जाएगा अपने यहाँ? या फिर द कॉज ऑफ द फटीग शुड बी डिटरमाइंड. Fatigue indicate that the client cancer is not under control. Balance, rest, and work. So, guys, the answer of this question will be option number D. That you need to ask the patient to take rest and then calm down, relax. तो ये आंसर जो है वो आपका रहेगा, क्योंकि किसी को फटीग है तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर थोड़ी एक्टिविटी कीजिए. आप ये एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं. So guys, the next question in front of you, question number 7. A client undergoes a circular skin punch biopsy to confirm a diagnosis of skin cancer. Immediately following the procedure, the nurse should observe the site for what? अगर किसी पेशेंट की बायोप्सी की गई है वो भी स्किन की, तो guys always go for hemorrhage. So the option number C will be the correct answer. That is the hemorrhage. Always go for hemorrhage. अगर बायोप्सी का जो एक साइड इफेक्ट है that is bleeding. Okay, so go for hemorrhage. Next, question number 8 in front of you. A nurse identifies that a client receiving chemotherapy has lost weight. सबको मालूम है कि कैंसर में मोस्टली मोर देन 10% बॉडी वेट रिड्यूस होता है. दैट इज वेरी कॉमन फाइंड, नॉट गुड फाइंडिंग, इट्स नॉट अ नॉर्मल फाइंडिंग बट इट्स abnormal finding, but it's very common. So what are the appropriate nursing interventions? Select all that apply. तो आप पेशेंट को क्या रिकमेंड कर सकते हैं? प्रोवाइडिंग low carbs meal, explaining the effect of chemotherapy, encouraging the intake of preferred foods, promoting the intake of small and frequent meals, administering ordered antiemetics before meal. So guys, यहाँ पे आपको ऑप्शन एक से ज्यादा के आंसर देने हैं. Okay, so you according to your question, what do you think? What will be the correct answer? नर्स आइडेंटिफाई कर चुकी है कीमोथेरेपी में वजन काफी कम हुआ है, तो अब एप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस आप लोग क्या देंगे? So guys, appropriate interventions. Okay, so give me the answer. Okay, you have few seconds, you can pause the video. The answer will be encouraged to intake for the preferred foods, ताकि वो कुछ तो खाए और उसका weight gain हो. Promoting the intake of small and frequent meals. अगर इसमें से सिर्फ एक आंसर आपको टिक करना होता तो ऑप्शन नंबर डी will be the correct answer, that small and frequent meals.
बट यहाँ पे select all that apply है, so you will go for 3, 4 and guys 5, okay and 5 because कीमोथेरेपी में एंटीमेटिक्स देना बहुत कॉमन है और मैंने ये पॉइंट काफी बार आप लोगों को बताया कि एंटीमेटिक्स देते हैं खाना खाने से पहले, कीमो देने से पहले, कीमो के बाद में, because all the time patient experiences for emesis, vomiting. Okay, next question number 9, guys, in front of you. A client is admitted for malignant melanoma that was discovered during a routine eye examination. So, guys, melanoma. Melanoma is a skin cancer, okay? It is of two types. First one is known melanoma and second is melanoma. Melanoma particularly जो होता है वो हमारे मेलिनोसाइट के सेल्स की वजह से होता है और ये सेल्स हमारी आईज में भी पाए जाते हैं, तो इसका कैंसर सिर्फ स्किन पर ही नहीं आईज में भी होता है. A client admitted malignant melanoma that was discovered during a routine eye examination. For which preferred treatment does the nurse expect the client to do schedule? So guys, आपको इसका आंसर ये बताना पड़ेगा कि अगर किसी को आईज में मेलिनोमा है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या सर्जरी होती है. सो गाइज, रेडिएशन और कीमोथेरेपी तो आप सब लोगों ने कॉमनली सुना है, बट आईज के केस में एनक्यूलिएशन हम करते हैं जिसका मतलब होता है आई को आउट कर देना. So let me give you the rationale of this question. So guys, malignant melanoma of the eye is an intraocular tumor that metastasizes rapidly. Therefore, removal of the eye is the treatment of choice. तो आईज को आउट कर दिया जाता है, उसे हम लोग इनक्यूक्लिएशन कहते हैं, इन्यूक्लिएशन कहते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? परफेक्ट. Next question number 10 we have in front of you guys. Just do it. You can pause the video, read the question and give me the answers. A client receiving chemotherapy for cancer developed sore in the mouth and asked the nurse, why this happened? ऐसा क्यों है मेरे साथ? मेरे मुंह के अंदर जो sores हैं वो क्यों डेवलप हुए हैं कीमो लेने के बाद? What is the nurse best response? The sore occur because because of the direct irritating effects of the drug. These tissues are poorly nourished because you have a decreased appetite. The rapidly dividing cells of the gastrointestinal tract are damaged by the drugs. This side effect occurs because it targets the cell of the gastrointestinal system. So guys, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट कीमो ले रहा है जिसे कैंसर है, ओके, फॉर कैंसर डेवलप सोर इन द माउथ. आज द नर्स की क्यों हो रहे हैं, क्या है, तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? So guys, the answer will be here, the rapidly dividing cells of the gastrointestinal tract are damaged by the drugs. Let me give you the rationale. Many chemotherapeutic agents function by interfering with DNA replication associated with cellular reproduction. Okay, rapid mitosis of the stratified squamous epithelium of the mouth, anus result in these areas being powerfully affected by the drug. Some are not caused by direct initiation. Most agents are administered parenterally. A decreased appetite, anorexia does not cause stomatitis. Chemotherapeutic agents affect most rapidly proliferative cells, which include the cells of the GI epithelium. So guys, in the next question, let's move on to the next question in front of you. A client receiving chemotherapy asked the nurses why an antibiotic was also prescribed. Okay, which tissue affected by chemotherapy should the nurse consider when formulating a response? So you have to give me the answer. A client receiving chemotherapy asked the nurse why an antibiotic was also prescribed. So guys, इसका आंसर क्या आएगा? Which tissue affected by chemotherapy? Which tissues? So the option number A, liver, blood, bone marrow, and lymph nodes. And I know everybody knows the correct answer. The correct answer is bone marrow. Right? Bone marrow is the correct answer of this question. Next question in front of you, everyone. A nurse is planning cure for a client with cancer who is receiving the plant alkaloid vincristine. Vincristine is a very common drug. In contrast to the side effect of most chemotherapeutic agents, what is a common side effect of vincristine that nurse must address in the client care plan? Guys, let me give you the direct answer. Vincristine का common जो side effect है, that is constipation. Okay, so आपको क्या करना है, constipation के लिए पेशेंट को एनीमा भी दे सकते हैं या फिर पेशेंट को हाई फाइबर डाइट आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं. Next question in front of you. A client is diagnosed with bladder cancer and a cystectomy and ileal conduct are scheduled.
What should the nurse plan to do pre-operatively, guys? अगर किसी का आप जीआई से रिलेटेड कुछ भी सर्जरी करने का प्लान कर रहे हो तो प्री ऑपरेटिवली आप क्या करेंगे? What will be the answer? Option 1, limit fluid intake for 24 hours. 24 hours? No. Hardly 8 hours or maybe 8 to 9 hours. That's it. टीच रेंज ऑफ मोशन कीगल एक्सरसाइज, इनका जीआई के साथ क्या लेना देना? नो लॉजिक। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इरिगेशन द इलिक कंडक्ट, या कर सकते हो एक्सप्लेन आप प्रोसीजर। एंड मिस्टर क्लींजिंग एनीमा लैक्सेटिव एज ऑलरेडी, यस एब्सोल्युटली। आप पेशेंट को अनीमास एंड लैक्सेटिव्स देंगे ताकि जो सर्जरी आप करने जा रहे हैं वो इन्फेक्शन ना करे, लीड आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस ना करे, और बाउल क्लीन रहे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है आफ्टर सर्जरी, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। Guys, next question in front of you. A client with cancer of the prostate requests the urinal at frequent intervals but either does not void or voids in very small amounts. What does the nurse conclude is most likely the causative factor? So, a client with cancer of the prostate requests the urinal, okay, at frequent intervals. लेकिन पेशेंट जो है ना तो void कर पा रहा है या और void कर रहा है तो बहुत ही कम मात्रा में. So what do you think? Most likely causative factor क्या है? Edema, dysuria, retention, or suppression? So guys, the answer will be yes, everyone. Retention of the urine. Perfect. Next question. This will be your last question, guys. This will be the last question of this video. A client is, debilitated state is admitted for palliative treatment of cancer of the liver. Which objective information collected by the nurse is most helpful for future monitoring of the client's condition? So, guys, आपने मुझे बताना है कि एक patient है एंड डेबिलिएटेड जो है स्टेट इज एडमिटेड फॉर पेलिएटिव ट्रीटमेंट के लिए वो आया है। आपको पता होना चाहिए कि पेलिएटिव ट्रीटमेंट लास्ट की ट्रीटमेंट होती है जब कैंसर ठीक नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में आप क्या मॉनिटर करते हैं क्लाइंट की कंडीशन? डाइट हिस्ट्री, बाउल साउंड्स, प्रेजेंट वेट और पेन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आई नो ज्यादातर लोग पेन की बात करेंगे क्योंकि सबको लगता है कि वो लास्ट स्टेज में है, पेन को मैनेज करना ही सबसे बेस्ट है। बट गाइज यहाँ पर जो कैंसर है, जो पेशेंट बेसिकली कैंसर से जो सफर कर रहा है और ट्रीटमेंट चल रही है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कैंसर में मोर देन 10% वेट रिड्यूस हो जाता है पेशेंट का। सो यहाँ पर आपका प्रेजेंट वेट क्या है वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा मॉनिटर करने के लिए, मोस्ट हेल्पफुल, क्योंकि इसी से हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। ओके, सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर वेरी ग्रेट एंड आप लोगों को इनके आंसर्स विद रैशनल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स को लेके। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।